So today it's a revision time of the lesson Flow of Heat, which is chapter number 6 from the textbook. So while revising this chapter, we will be uh, revising what all topics we did and what are the important points from the lesson. So these are the things that we are going to study today. So let us start. So the first thing that we did in introductory part or introduction of the chapter is we tried to understand flow of heat, how heat flows in a substance from high temperature to low temperature. Then we learned about conduction, how conduction happens. Okay, what is the exact process of conduction? What are the things that happen in conduction? We also learned some examples, and with examples we tried to understand conduction. Then we studied about convection. What is convection? That we studied. How heat gets transferred in case of convection. We also saw some examples to have a better understanding of the topic. Then we studied about radiation. What is the difference between conduction, convection and radiation? How radiation happens? And what are the natural resources of radiation? So these are the things that we studied in the topic radiation. And lastly, we had studied various applications of these three modes of transfer of heats, including thermoflask. So thermoflask भी हमने सीखा था इस applications के topic में. Now, let us see what are the important points from the lesson. What are the points that we should remember from this lesson? So, to begin with, the first point is the heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. And there are three ways in which heat can flow. The first one being conduction, second one convection, and third one is radiation. So these are the three modes of transfer of heat, and we should always remember that heat flows from high point to low point, that is from high temperature to low temperature. Then next point is in solids generally heat is transferred by conduction. सॉलिड्स में ज़्यादातर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन के थ्रू. इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन. मतलब लिक्विड्स और गैसेस में हीट जनरली कन्वेक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करती है. हाउएवर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन में अगर हीट फ्लो हो रही है तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. राइट? इन कंडक्शन वी नीड अ सॉलिड. जनरली सॉलिड्स ट्रांसफर द हीट, whereas कन्वेक्शन करंट्स में लिक्विड्स और गैसेस ज़्यादातर मीडियम होते हैं. हालांकि रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नाउ one by one we will see all the three modes of transfer of heat. So first mode being conduction. Conduction is mode of transfer of heat in which heat travels from molecule to molecule. मतलब heat molecule to molecule transfer होती है, and obviously it is from hot end to cold end. But the thing that we should remember in this is it happens without molecule moving themselves. मतलब इसमें molecule move नहीं होते. Second point, the material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat, or you can say they are good conductors of heat, जिसमें से heat pass होती है अच्छी तरह से. The materials which do not allow heat to pass through them are called insulators. So lead is an example, then rubber is an example where they don't transfer the heat. So these are insulators of heat. Let us see next point. Convection. Convection is process of transfer of heat in which heated molecules of a liquid themselves move to carry heat from hot to cold region. मतलब इसमें मॉलिक्यूल खुद मूव करते हैं हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक, या हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर तक. During transfer of heat by convection, currents are set up in the liquid or gases. Land and sea breezes in coastal area occur due to convection current. मतलब जो कोस्टल एरिया है, जैसे कि हमारा कोंकण रीजन है,
तो इस हमारे कोकन रीजन में हमने देखा होगा कोस्टल एरिया में जिधर सी होते हैं वहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, मतलब दिन के समय में आपको समुंदर के साइड से विंड आता दिखेगा, whereas in night time wind blow from land towards sea. So this is what happens, and it happens because of convection currents set up in air. See next point, heat radiation. Heat radiation is a transfer of internal energy in the form of electromagnetic waves. So यहाँ पे एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई मीडियम नहीं होता. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. Black or dark colored objects absorb or radiate more heat than white objects or light colored objects. तो यहाँ पे डार्क या ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. ऑन द कॉन्ट्ररी वाइट और लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स they reflect very less. I repeat, black or dark colored objects absorb more radiation, whereas white or light colored objects absorb less radiation. They reflect more. Okay, so white objects reflect more amount of heat, whereas black or dark colored object they absorb more amount of heat. So there is a difference. Black या dark colored object में absorption ज़्यादा होता है, whereas white और light colored objects में reflection ज़्यादा होता है. Let us see next point. A thermos flask or a vacuum flask is used to keep a hot liquid hot and cold liquid cold for a long time by preventing loss or gain of heat एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो यहाँ पे थर्मोफ्लास्क में जो भी हम अंदर रखेंगे हॉट लिक्विड या कोल्ड लिक्विड, ये ज़्यादा देर तक उसी टेम्परेचर पे रहता है. वाई? बिकॉज थर्मोस फ्लास्क डू नॉट अलाउ लॉस और गेन ऑफ हीट ड्यू टू एनी मोड. कंडक्शन से भी नहीं होगा, कन्वेक्शन से भी नहीं होगा, रेडिएशन से भी नहीं होगा. दे प्रिवेंट दिस लॉस और गेन ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. और इसीलिए थर्मोफ्लास्क में हॉट लिक्विड ज़्यादा देर तक हॉट ही रहते हैं और कोल्ड लिक्विड ज़्यादा देर तक कोल्ड ही रखते हैं. ठीक है बच्चों. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट. असाइनमेंट में आपको क्या करना है? यू हैव टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो यू विल ट्राई वन वर्ड आंसर्स. तो वन वर्ड आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स or objective type of questions you have to try in your notebook. Okay, you can refer your textbook for that. Also you can refer our videos that I have posted. ये वीडियो रेफर करके भी आप इसके आंसर इजीली दे पाओगे. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही. See you in the next session. Until then, take care. Bye bye.